Chapter 3 Audit, Risk Assessment and Internal Control. तो शुरू करते हैं फ्रॉम ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है? ओह शिट, सॉरी गाइस। तो व्हाट इज एन ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क वो है कि ऑडिटर जो है एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब कि जो ऑडिटर है वो ओपिनियन दे रहा है कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर क्या बोल रहा है कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स। तो दिस इज बेसिकली एन ऑडिट रिस्क, means that the risk that auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statements are material misstated. It means that auditor जो express कर देता है unmodified opinion जब financial statements में material misstated है. In such a case, not only reputation of auditor would be damaged, but it could also invite regulatory action from professional body and could face probable legal action by intended users. To avoid such unpleasant consequences, the auditor will plan and perform the audit in such a way that audit risk is reduced to an acceptably low level. And as 200 state that auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably low level, and thereby enabling the auditor to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. Consider, for example, the profits of a company has been increased artificially by showing fake revenues of sizable amounts in its financial statements. In such a case, financial statements are materially misstated. The probability that auditor in such a case expresses an inappropriate audit opinion is referred to as audit risk. It is the possibility the auditor expresses an unmodified opinion even when the financial statements are material misstatement. Is a function of risk of material misstatement and detection risk. अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क ऐसे 200 के हिसाब से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा रिस्क है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल मिसस्टेटेड है प्रायर टू ऑडिट। मतलब ऑडिट होने से पहले ही जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मटेरियल मिसस्टेटेड है, उसको हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, जिसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है फ्रॉड या एरर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट से पहले। तो 200 के हिसाब से risk of material statement is the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. It simply means that there is a probability of frauds or errors in the financial statements before audit. What is meant by misstatement? Misstatement क्या होता है? When जब difference of amount classification, presentation और disclosure में of a reported financial statement item और जो amount classification, presentation, disclosure है वो required है for the item to be in accordance with the फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये हो फ्रॉड और एरर की वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो मिसस्टेटमेंट रेफर टू अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम and the amount of classification presentation disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. Misstatements can arise from error or fraud. नाउ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के? या तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है, मतलब चार्ज कर दिया है, या फिर रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है, या फिर डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम विज इट्स रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Difference in disclosure of a financial statement item vis-a-vis its requirement in applicable financial reporting, या फिर selection of application of inappropriate accounting policy, कोई inappropriate accounting policy को हमने select या apply कर लिया हो, या फिर overstate या understate कर दिया हो inventories को, या फिर डिफरेंस हो इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम विज इट्स अप्रोप्रिएटनेस इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंटेंशनल बुकिंग करनी हो, हमने फेक एक्सपेंसेस दिखा दिए हो पीएनएल में, या फिर ओवरस्टेट कर दिया हो रिसीवेबल्स को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय नॉट राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट्स। अब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट दो लेवल्स पे हो सकती है, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या फिर असर्शन लेवल फॉर एबीसीडी अकाउंट बैलेंस क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। Risk of material statement refers to at overall financial statement level refers to the misstatements risk of misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions that relate pervasively to the financial statements as a whole and potentially affect many assertions. या फिर assertion level पे risk of material misstatement at assertion levels are assessed in order
to determine the nature, timing, and extent of further audit procedures necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion on the financial statement at acceptably low level of audit risk. अब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एट असर्शन लेवल? दो कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो हम जानते हैं अब इनहेरेंट रिस्क क्या होता है। सब्सेबिलिटी ऑफ एन असर्शन दैट कुड सब्सेबिलिटी ऑफ एन असर्शन दैट अबाउट अ क्लास बैलेंस अकाउंट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, उल्टा ही बोल रही हूँ। डिस्क्लोजर to a misstatement that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. So, susceptibility of an assertion about a class of transaction account balance, disclosure that is material to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related control. Subsidiarity of assertion about a class of transaction, account balance, disclosure to a misstatement that could be material या तो individually या फिर when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls as described in essay 200. There's a always there is always a risk that before considering any existence of the internal control in an entity, a particular transaction balance of an account or disclosure required to be made in the financial statements of an entity have a chance of being misstated, and such a misstatement could be material. This is known as इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो हायर हो सकते हैं कुछ assertions के लिए रिलेटेड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर देन फॉर अदर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट मे बी हायर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। Inherent risk factors are considered while designing test of controls and substantive procedures. Category of auditors assessment, lower or higher, each category covers the range of degrees of inherent risk. Auditor may assess the inherent risk of two different assertions as lower while recognize that one assertion has less inherent risk than other, although both have been assessed as lower. It is important to consider the reason for each identify inherent risk, even if the risk is lower when the auditor design test of controls and substantive procedures. External circumstances giving rise to the risk may also influence the inherent risk. For example, technological developments might make a particular product obsolete. Few examples: an accounting standard provides guidance on some complex issue which might not be understood by the management. Therefore, recording of this issue in financial statements carry inherent risk of being misstatement. There are large number of business failures in an industry. Therefore, assertions in financial statements of an entity operating in such industry carry an inherent risk of being misstated. Now, control risk. Control risk क्या होता है? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन, एक ऐसा मिसस्टेटमेंट जो असर्शन में अकर होता है अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर दैट कुड बी मटेरियल इधर इंडिविजुअली और व्हेन aggregated with other misstatements will not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the entity's internal control. So, control is a risk that the misstatement that could occur in assertion about a class of transaction, account balance, or disclosure that could be material in the individual when aggregated other misstatements will not be prevented, detected, or corrected on a timely basis by the entity's internal control. Control risk ऐसा risk है that internal control exists and operating in an entity would not be efficient enough to stop from happening or find and then rectify in an appropriate time any material misstatement to a transaction, balance of an account, or disclosure required to be made in the financial statements of the entity. Therefore, in a way, it can be said that there exists an inverse relationship between control risk and efficiency of internal control of an entity. When efficiency of internal control of an entity is high, the control risk is low, and when the efficiency of internal control of that entity is low, the control risk is high. Examples क्या है control risk के?
तो अगर हमने ऐसा कंट्रोल लगाया कि जो कैश और चेकबुक्स है वो एक सेफ स्पेस में रखनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि वो कंट्रोल हम फॉलो किया जा रहा हो, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स जो है लगा रखे हैं वर्किंग कंडीशन में हो ऑल टाइम्स, तो रिस्क है कि फायर एक्सटिंग्विश जो है एक्सपायर हो गया हो या फिर रिफिल ना किया हो गया हो, स्मोक डिटेक्टर्स वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये सब। नाउ डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? Detection risks are the procedures performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level. ऑडिटर परफॉर्म करता है ऐसे प्रोसीजर रिड्यूस करने के लिए ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल, वो क्या डिटेक्ट ना हुआ हो। So detection risk is the risk that the procedures performed by auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and could be material either individually or when aggregated with other misstatements. Detection risk दो तरह की हो सकते हैं, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग ये कि ऑडिटर जो है कंक्लूजन पे रीच, एरोनियस कंक्लूजन पे रीच करता है फॉर एनी रीजन जो रिलेटेड ना हो सैम्पलिंग रिस्क से, like auditor may reach an erroneous calculation due to application to some inappropriate audit procedure. Or sampling risk that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population was subjected to the same audit procedure. It simply means that sample was not representative of the population from which it was chosen. डिटेक्शन रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग, टेस्टिंग लार्जर सैम्पल्स एंड बाय इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स इन द एंगेजमेंट टीम। ऑडिट रिस्क में तीन चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती: लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी एंड अदर इवेंट्स। ऑडिट रिस्क में ये इंक्लूडेड नहीं होता कि ऑडिटर जो एक्सप्रेस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपिनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मटेरियल मिसस्टेटेड है, जबकि वो नहीं है। ऑडिटर ऐसा क्यों करेगा भाई? कौन सी? असेसमेंट ऑफ रिस्क और मटेरियल मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो यहाँ हमारा ये जो ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ऑडिट रिस्क में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क आते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड उसमें combined assessment. Audit risk is equals to risk assessment, risk of material statement, reduction risk and audit risk. Now essay 315, identifying, assessing the risk of material misstatement. Essay 315, identifying and assessing risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. Through understanding the entity and its environment. The objective of the auditor is to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and the assertion level. Through understanding the entity and its environment, including the entity's internal control, thereby providing a basis for designing implementing responses to the assessed risk of material. This will help the auditor reduce the risk of material to acceptably low level. तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई एनालिसिस करना है assertion लेवल, फाइनेंशियल लेवल, दो लेवल पे हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई assertion, द ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई करना रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। आइडेंटिफाई करना, असेस करना, फिर दो और था ना, हाँ, रिलेट एंड कंसिडर। Identify, assess, relate, and consider. Identify risk throughout the process of obtaining understanding of the entity and its environment. Identify करना risk throughout the process of obtaining an understanding of entity and its environment, including relevant controls.
They relate to the risk and by considering the classes of transaction, account balance, and disclosure in the financial statement. तो identify करना risk throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, फिर include करना relevant controls जो relate करते हैं to risk and consider करना classes transaction account balance disclosures. फिर assess करना कि identify risk, assess करना identified risk को evaluate करना वो जो कि क्या वो रिलेट करते हैं मोर परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल या फिर पोटेंशियली अफेक्ट many assertions. फिर रिलेट करना द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द assertion level taking account of relevant controls that the auditor intends to test. फिर कंसिडर करना द likelihood of misstatement including the possibility of multiple misstatements, whether the potential misstatement is of a magnitude that could result in a material misstatement. रिस्क एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज और मैनेजमेंट ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी एंड हु इज इन द ऑडिटर्स जजमेंट may have information that is likely to assist in identifying risk of material misstatement due to fraud or error. यहाँ materiality ऐसे 320.